Thank you, Tariq Fateh Saab, for asking some tough questions about Muslims and about India. We have plenty of time for questions. Before I invite you to ask some questions, as a moderator, I have some responsibilities and some rights. So I'm going to ask the first questions. One question is to the three speakers. So my first question is to Dr. David Frawley. We have seen that some fringe Hindu elements threaten India's social cohesion. We have seen that some fringe elements, Hindu elements, threaten India's social cohesion, like Gaurakshaks and all those who took law and order in their own hands. How can we address that? Addressing the fringe elements? Yeah. Yes, you mean integrating the society. You see, India has been a country that has bent over backwards to accommodate everybody, rather than creating a strong national model that people can follow. Let me put that in comparison to the United States. In the United States, there's a strong national model that allows people from various backgrounds to come in and share who they are. It does not create a system of separate identities that divides the country into different groups. India began with the partition based on religious grounds, and on that basis, every other group has wanted some sort of partition or benefit. But you reach a position of diminishing returns where the state is perceived as not you. The state is perceived as the British, the enemy, a welfare state, the bank. So you expect the state to raise you up rather than cooperate and be part of the state to raise the country up. And then the fringe elements coming up because they also feel disenfranchised. Their particular views have not been addressed. And in the Indian context, because India has also taken that kind of weak, accommodating role of foreign policy, like instead of strongly countering Pakistan, I wrote somewhere recently, India tends to treat Pakistan like a long-lost brother, wanting to come back into the family. Whereas Pakistan treats India like the arch enemy that must be killed and destroyed at all costs and undermined and in every possible way. So instead of dealing strongly with the fringe elements, whether the Islamic extremists or whether the Naxalites, there is again this accommodating attitude to bring them in, which only gives more credence to their more separatist values and ideas. And we've seen this phenomenon in India where terrorists are being turned into heroes and they're given national attention, and their rights are being debated. What about their rights? Whereas the police, the military that die against the fighting against these fringe elements, their rights are forgotten. In fact, their whole honesty and modus operandi is questioned, as if the police and the military should be questioned, not the terrorists. Somehow the terrorists have human rights and right of being right until being proved wrong, whereas the military and police are regarded as being wrong until they have proved right. Oh, he's talking the Hindu fringe. Okay, the Hindu fringe groups. Okay. Well, let me answer that question a little bit differently then. Hindu fringe groups. In the Hindu society, there is also a very wide variety of different groups. We see the same thing in Christianity and in other groups as well. And there's been a tendency to regard or to turn any Hindu response into a kind of Hindu fringe group or Hindu negativity. There are certain fringe and extremist groups, but they're usually concerned about certain local issues or certain special issues,
and mainly the issue of caste and the issue of protecting certain communities. So they are there to some degree, but they are not an equal phenomenon. This idea that Hindu terrorism must be made equal to Islamic terrorism, so there is an equality of discourse in the country is not correct. And looking at the specific issues involved. For example, there has been this struggle over the years over the issue of cow protection, clash of different cultures, and all of that. These issues do need to be addressed, but there's a tendency in India to portray Hindus as extremists on principle and other groups as non-extremist unless some very major case has been being produced against them. But what I would say this is the Hindus have to communicate who they are better. They have to grab the perception better. And they have to go back to the core values of the Sanatana Dharma and not hold on to certain very limited cultural customs which may be of a certain part of India or which may be something that came from a certain period of time. Reform in Hindu society is necessary, and there are reform movements in Hindu society, and these need to be strengthened. And particularly Hindu society also needs to give more power to the women and promote a greater system of education. And as he was also saying, there's a need to look forward and create positive models for the future. But this Hindu backlash is not going to entirely go away until there is a greater sense of equality of discourse in the country. And certain perceptions have been created of extremism where they have not entirely been there and used for political purposes. That also needs to be examined. I'll ask a question. My question is addressed to Tariq Fateh. In the Indian history and general discourse, we put Maulana Azad on a very high pedestal. And we take it back to the 1946 accord with the cabinet mission, where Maulana Azad apparently succeeded in keeping India together, and which later, that accord later fell apart. However, the posterity, especially now in the context of what is happening these days, people have started looking at Maulana Azad differently. So what's your view on Maulana Azad's contribution to India's unity? Well, you can't take away his contribution. जी जी देखें, मौलाना आज़ाद की जो आज़ादी की मूवमेंट में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो तो दुरुस्त है बेतहाशा लोगों के साथ, लेकिन थोड़ा सा एलिवेट हिंदुस्तान में इसलिए किया क्योंकि हिंदुस्तान ने ये तय किया कि ये हमारा मुसलमान है, पाकिस्तान का मुसलमान जिना है और ये हमारा 5 वक्त का नमाजी मुसलमान है। जिना और आज़ाद में ये फ़र्क था कि जिना नॉन प्रैक्टिसिंग मुसलमान कह रहा था, मुस्लिम नेशनलिज्म में बिलीव करता था इकबाल की तरह, और वो कहता था कि हिंदुस्तान पे मुग़लई सल्तनत और इस्लामिक रूल करने के लिए ज़रूरी है कि एक लॉन्च पैड बनाया जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं था बंगाल में क्या होता है। और वहाँ से फिर हम फिर एक बार फिर कुव्वत इस्लाम मस्जिद जाएंगे दिल्ली में और वहाँ रेड फोर्ट पे कब्ज़ा करेंगे। जो जमीयत उलमा हिंद और उर्दू स्पीकिंग यूपी के जो मुसलमान थे जो कांग्रेस के साथ थे, उनकी थ्योरी ये थी जमात इस्लामी जमीयत उलमा हिंद की कि हिंदुस्तान पे मुसलमानों का रूल करने के लिए ज़रूरी है कि ये सब साथ रहें, वो आसान होगा। ये इनमें से किसी ने भी नहीं कहा
कि हिंदुस्तान पे जो हमले हुए मुसलमानों के 600-700 साल तक वो गलत है। आज तक किसी ने नहीं कहा, ना देवबंदियों ने कहा, ना बरेलवियों ने कहा, ना मौलाना आज़ाद ने कहा, ना शायद जिन्ना ने कहा भी हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने नहीं। तो ये इकट्ठा रखने के अंदर कंट्रीब्यूशन ज़रा एग्जैजरेटेड इसलिए है क्योंकि जिस तरह का हिंदुस्तान एक रहा है वो एक झूठी हिस्ट्री के बेसिस पे, जो उनका पहला एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस किस्म की तारीख और सिलेबस किया उसमें 2-3 जनरेशन झूठ पे पल के आगे आ गए कि हिंदुस्तान या दिल्ली में आज तक किसी को यही नहीं ऑड लगता है कि लोधी एस्टेट क्या चीज़ है। यानी आप मुमकिन है कि वॉर्सो के अंदर हिटलर कॉलोनी हो, तो एक बाबर को आपने हिंदुस्तान का रूलर मान लिया जो ना पैदा हुआ ना मरा, यहाँ पे आया, लूटा, मस्जिद बनाई, फसाद किया और कहा कि हिंदू बदसूरत होते हैं इसीलिए चला गया। ये सबको इंक्लूड किया इस कोशिश में कि तारीख को ज़रा तोड़ के जोड़ेंगे तो सब साथ रहेंगे। हुआ ये है कि अब लोग पढ़ के जिस हिंदू फ्रिंज ग्रुप्स की बात कर रहे थे हमारे प्रोफेसर साहब, कि ये उन लोगों को एक रिएक्शन हो रहा है, ये बिल्कुल उसी टाइप का रिएक्शन है जो जिसको ट्रंप लेके आया है, जो ऑस्ट्रिया में हो रहा है या फ्रांस में लेपेन जीतेगी, कि झूठ सुन सुन के लोग अब तंग आ गए, आम आदमी, क्योंकि अब इंटरनेट पे हर शख्स के पास किताब आ सकती है। तो मौलाना आज़ाद मेरे हिसाब से उनका बड़ा एक रेसिस्ट व्यू था नॉन उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों के लिए। ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने धोखा दिया बादशाह खान को, उन्होंने बलूचिस्तान को धोखा दिया, क्योंकि उनके जहन में ये मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा इम्प्रेशन ये है, और तुफैल ने तो इस पर लिखा भी है काफ़ी, कि वो हमको नॉन उर्दू बोलने वाले हमारे टाइप के लोगों को ठीक समझते ही नहीं थे। मुसलमान तो वो होता है जो अच्छी नफीस उर्दू बोले, वरना ये बाकी लोग तो कचरा वचरा हैं। एंड सो ही मेड अ ह्यूज मिस्टेक इन लेटिंग NWFP गो। अगर वो इकट्ठा रखना चाहते, ही वुड शुड हैव बीन एडमेंट कि बादशाह खान हमारे हिंदुस्तान में होगा, सूबा सरहद हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बलूचिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होता, और सिंध के बगैर तो हिंद हो ही नहीं सकता। ये बात उन्होंने कभी नहीं कही। अगर मौलाना आज़ाद के बारे में तुफैल के भी काफ़ी रेडिकल व्यूज़ हैं, तो आप कुछ इसके ऊपर मैंने एक मौलाना आज़ाद पे एक आर्टिकल लिखा है जिस पे, जो कि फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट पे है, उसे आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने आर्ग्यू ये किया है कि बेसिकली जो उनकी थिंकिंग थी, सोच थी, वो बिल्कुल उसी तरह थी जो आज के जिहादियों की है। और लोगों ने ये मुझसे सवाल किया कि वो तो नेशनलिस्ट थे और वो देशभक्त थे और देश के लिए उन्होंने बाद में काम भी किया है। तो इसको मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंड किया गया है मौलाना आज़ाद को कि नेशनलिस्ट थे। आपको ये समझना होगा कि उस ज़माने में बहुत से जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, मौलाना आज़ाद हों, दारुल उलूम देवबंद के हों, और भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने पार्टीशन को अपोज़ किया था। लेकिन उन्होंने पार्टीशन को अपोज इसलिए नहीं किया था कि वो नेशनलिस्ट थे, वो इसलिए किया था कि उम्मा जो है, ग्लोबल नेशन, उसमें डिवीज़न का कंसेप्ट नहीं है। मुस्लिम सब जगह रहते हैं, एक ही खिलाफत होगी, एक ही कंट्री होगी और कोई पासपोर्ट नहीं होगा, तो उनका वो एक कंसेप्ट है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से उन्होंने इंडिया को बाद में सपोर्ट किया है। तो कैन वी टेक द क्वेश्चंस टू, देयर आर एक दो क्वेश्चंस और। एक क्वेश्चन मैं सुशांत सरीन से पूछना चाहता था कि डू यू थिंक इंडियाज सेंटर राइट is becoming sectarian, obscurantist in its outlook? मेरे ख्याल सेंटर राइट अभी पूरी तरीके से डिफाइंड ही नहीं है। जिसको हम लोग राइट विंग फोर्सेस कहते हैं, वो एक लिहाज से ज़रूर एक ऑब्सक्यूरेंटिज्म भी है, उसमें एक सेक्टेरियनिज्म का भी पहलू ज़रूर है, वो तो है। लेकिन वो मेरा मानना ये है कि उसका एक रिएक्शन भी है। लेकिन
जो मुझे ज़्यादा एक लिहाज से चीज़ से तकलीफ़ होती है वो ये है कि जो हिंदू राइट विंग जो भी है, जिस तरीके का भी है, उसके जो बहुत सारे रवैये हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जो मुस्लिम राइट विंग के या जो मुस्लिम फनेटिक्स के हैं, बहुत सारे रवैये वैसे ही हैं। और ख़ास तौर पर ज़्यादा तकलीफ़ दे मेरे लिए बात है वो जेंडर जस्टिस को लेकर के है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जिस तरीके की सोशल या कल्चरल मोर्स हम अपने बच्चियों के ऊपर डालते हैं या जिस तरीके की उनको उड़ान देने की ज़रूरत है और जिससे हम उनको रोकते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हिंदू समाज में तो जो महिलाएं हैं उनका जो दर्जा था वो कई तरीके से पुरुषों से भी बेहतर था। हम क्यों वो वाली प्रथाएं जो शायद अरेबिया या कहीं और से आई हैं वो क्यों हम इधर यहाँ पर अपने लोगों के ऊपर थोप रहे हैं? क्यों हम एक और वो वाली जो ऑब्सक्यूरेंटिज्म है, मुझे उससे एक सख्त नफरत है। मेरी खुद 2 बेटियां हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि वो जो करना चाहें अपनी ज़िंदगी में वो करें। उनके पास वो सारी की सारी आज़ादियाँ होनी चाहिए जो शायद अगर मेरे पास बेटा होता तो मैं उसको देता। मैं तो अपने बच्चियों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आई वॉन्ट कि दे शुड गेट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्यों उस दायरे में अपने आप को फंसा रहे हैं कि नई लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, नई एक लेवल तक उनकी एजुकेशन होगी? क्यों हम ये करते हैं मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर या हमारी संस्कृति में ये तो बात थी नहीं कभी, तो ये कहाँ से आई है? एक तो पहलू ये है। दूसरी चीज़, बहुत सारा जो हमारा डिस्कोर्स होता है वो बिल्कुल उस तरीके का होता है, उसमें वो जो सेक्टेरियनिज्म की आप बात कर रहे हैं वो है, एक इनटॉलरेंस का फैक्टर जो है, जो शायद हमारे समाज में कभी था नहीं। अब हम लोग मिक्स कर देते हैं बहुत सारी इश्यूज़ को। अगर हमको ये लगता है कि भाई आप एक तरीके से जो सरकार की नीतियां हैं या जिस तरीके की राजनीति भारत में हो रही है उसमें जिसको एक लिहाज से तुष्टीकरण बोला जाता है वो प्रैक्टिस हो रहा है, उसको अपोज करना एक चीज़ है, लेकिन उसकी ऑपोजिशन को एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट तरीके का डॉक्ट्रिन बना लेना, मेरे ख्याल वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। सारे रिलीजन्स को इकट्ठे मिलकर के चलना पड़ेगा। जो जैसे तारिक कह रहे हैं कि आप अगर भारत में 120-25 करोड़ मुसलमान हैं तो उनको भारत का नागरिक समझ करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो उसमें हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जो जितनी शायद उस समुदाय के लोगों की है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इकट्ठे मिलकर के चलना पड़ेगा। हाँ, जो भी उसमें कोई ऐसी चीज़ करता है जो देश के लिए नुकसानदेह है उसको दंडित करना चाहिए विदाउट फियर और फेवर। एक क्वेश्चन तारिक साहब आपके लिए था। ये देखा जा रहा है कि मतलब ज़्यादातर मुसलमान जो हैं मोस्टली वो कुरान को नहीं फॉलो करते, प्रैक्टिकल लाइफ में नमाज नहीं पढ़ते। तो क्या आपकी नज़र में इस तरह के जो मुस्लिम्स हैं उनमें एक पॉजिटिव चेंज की पॉसिबिलिटी है? देखिए, जिन्ना साहब तो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो उन्होंने जो हरकत करके दिखा दी वो तो एक जेनोसाइड कर दिया, और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि ही विल बी ट्राइड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एक शख्स की वजह से 10 लाख लोग मरे, 47 में, 71 में 30 लाख मरे, रोज़ 100 आदमी बलूचिस्तान में मर रहे हैं ताकि जिन्ना साहब की कब्र में उनको सुकून से नींद आए। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनकी तो फ्लाइट गई नहीं कहीं, वो वहीं पड़ी रहेगी। और देखिए, वो सेक्युलर मुसलमान था। दूसरे मुसलमान सेक्युलर आप देखिए, इकबाल साहब, वो एक ऐसा शायर है जिसने अपनी शायरी की चोरी की। पहले उसने लिखा तराना, हाँ ना, सारे जहाँ से अच्छा, फिर मिल गए टैगोर को नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। इन्होंने शाह वीरान को लिखा कि ये तो काले रंग का हिंदू है, मुझे क्यों नहीं बुलाते हो? उन्होंने कहा तू तो इकबाल लाहौरी है, तुझे क्या बुलाएंगे? तो उसने अपनी शायरी में पूरी फिलॉसफी बदल के मिली तराना बना दे कि
क्या हिंदुस्तान हमारा, चीन और अरब हमारा, हम मुस्लिम हैं, सारा जहां हमारा। यानी विद इन 5 years एक आदमी बदल गया एंड ही वाज सेक्युलर। तो मुसलमानों का नमाजी होना या ऑर्थोडॉक्स होने से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। कई मौलवी ऐसे हैं कनाडा में जिनके साथ मैं हर वक्त बैठता हूँ, क्योंकि वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान की मुसीबत है कि यहाँ मुल्ला का इस्लाम चलता है। देखिए एक चीज़ और समझिए कि कुरान के आने से पहले रसूलुल्लाह के साथ लोग मुसलमान हुए। इसका मतलब ये लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि यू डोंट इवन हैव टू नो द कुरान टू बी ए मुस्लिम। आप पे तौहीद की है कि देयर इज नो गॉड बट गॉड, एंड आप किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये है इस्लाम। 5 जो आपके पिलर्स हैं, हज, ज़कात, उसमें यानी उसमें भी नहीं है कुछ है। पढ़ने का तरीका आज तक तय नहीं हो पाया। मुसलमानों में 25 किस्म के इस्लाम है, 25 किस्म की मस्जिदें और 26 किस्म की दुआएं हैं, और कोई 5 करोड़ किस्म की बद्दुआएं। तो वो तय नहीं हो पा रहा है कौन है। कोई ऐसे पढ़ रहा है, कोई आप अरबियों की मस्जिद में चले जाइए तो पाँव यूँ फैला के पढ़ते हैं। हम हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं कर क्या रहा है। मैंने कहा ब्रदर व्हाट इज दिस? ब्रदर द शैतान विल गो बिटवीन दिस। अरे किधर शैतान जाएगा, किधर आएगा, किस शैतान की बात कर रहे हो? वो और यूं करके दे एल्बो। जो रूडनेस आपको अरब की मस्जिद में नजर आएगी, उतना ही आपको हिंदुस्तान की मस्जिद में प्यार मोहब्बत नजर आएगा, क्योंकि यहाँ हम सुधर गए। जो कन्वर्ट हुए, मेरे जैसे राजपूत हैं, हम तो 1850s में कन्वर्ट हुए, या जो आके यहाँ सेटल हो गए, सबको अकल आ गई कि मौसीकी क्या होती है, सितार क्या होता है। अरबिस्तान में ना लकड़ी ना तार, तो दफ ही बजेगा ना, मतलब क्या होगा, वो भी ऊँट की खाल का। तो हमें तो नहीं कोई आके बताए कि सारंगी क्या होती है या रागा क्या होता है, हम तो उनको सिखाएंगे। तो किसी का मजहबी होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी का झूठा होना और सेक्युलर होना और छुपा के रहना और फिर सब करके सेक्युलरिज्म की बात करके हज की सब्सिडी लेके हज कर देना, इससे बड़ा झूठ। मुसलमान पे हज अलाउड ही नहीं है अगर वो किसी और के पैसे से करे, और पूरा हिंदुस्तान लूट रहा है हिंदुओं के पैसे और कह रहा है सब्सिडी पे हज करने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती लोगों को कि वो हज जिस पे अल्लाह ताला ने कह दिया तुम पे पैसे नहीं है, एग्जाम। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो इतने सारे हिंदू रहते हैं, इनके टैक्स के पैसे से हम सब्सिडी लेंगे, तो लीजिए संजय साहब के पैसे से मैं हज करके आ गया। वो उनको पता भी नहीं। तो बेईमानी जो है उसका मजहबी होने से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो सेक्युलर लिबरल हैं मुझे उनसे खौफ आता है हिंदुस्तान में, क्योंकि वो झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे उन्हीं मौलवियों को पाला हुआ है। वही मौलवी जो मुझ पे फतवा लगा देते हैं, वो उनके घरों में बैठे बड़ा अच्छा सा डिनर खा रहे होते हैं और कभी कभी शराब भी पी लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोको कोला में मिला के। तो ट्रूथ इज द अल्टीमेट क्या कहते हैं, बैरोमीटर ऑफ समथिंग बीइंग गुड और बैड। और सेक्युलर लिबरल होना इज नहीं। अगर आप मौलाना हैं और आप इस्लाम और कुरान को फॉलो करते हैं, मेरे सर आंखों पे, और अगर आप जिना हैं, सूअर खाते हैं और दोस्त की बेटी भगा के ले जाते हैं, तो आप पे लानत हो। माइक्रोफोन्स आप लोगों के बीच में है, और पहला क्वेश्चन इधर ये लेडी हमारे सामने बैठी है, मेरे ख्याल से लोगों को देते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी पड़े। ओके ग्रेट, यस। This is question from शीनम छाबड़ा। शीनम जी पूछ रही हैं कि ये जो टेररिस्ट की जो 1 वे फ्लाइट है, हाँ। और डेथ कल्ट है, तो इसको रोकने के लिए ये मुनासिब नहीं होगा कि साहब की उनकी जो भी बॉडी है वो मेडिकल कॉलेजेस में डोनेट कर दी जाए बजाय कब्र में दफन करने के? मेरा तो देखें, ये जब भी दहशतगर्दी होती है, जिसको आप लोग आतंकवादी कहते हैं, जब भी होती है हर मौलवी कहता है ये तो मुसलमान ही नहीं था। तो मैं कहता हूं कि उसको फिर जला दो, तड़का अच्छा सा दे के, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, वो तो है ही नहीं मुसलमान, फिर रोने का क्या। तो वो कौन था, हानी वानी क्या नाम था जो कश्मीर में, बुरहान वानी, उसको तो सूअर के तेल के साथ लपेट के जलाना चाहिए था।
क्योंकि कुरान रखा हुआ है, AK-47 रखा हुआ है, और मौलवी कह रहे हैं तो मुसलमान ही नहीं, दहशत, हमने फतवा लगा दिया है कि आज के बाद टेररिज्म के अगेंस्ट। अबे क्या फतवा लगा है? जिहाद के अगेंस्ट फतवा लगाओ ना। हमको क्यों बेवकूफ़ बना? हम तो मुसलमान हैं, हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया कि अरे साहब 25 लाख मौलवी आ गए सड़क के ऊपर कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट है। अबे नहीं, तू जिहाद के फेवर में, टेररिज्म के अगेंस्ट है। टेररिज्म तू नक्सलवादियों वालों की बात कर रहा है। पाकिस्तान को जब ये गाली देते हैं तो मत सुने इनकी बात, इनके दिल अब भी वहीं धड़क रहे हैं मौलवियों के, क्योंकि इनको पता है कि वहीं से लश्कर आएगा ग़ज़वा हिंद का, बांग्लादेश से नहीं आने वाला। इसीलिए आप देखिएगा, दो चीज़ें याद रखिए। जब 71 में बांग्लादेश में 50 मिलियन मुसलमानों के अंदर कत्लेआम हो रहा था, हिंदुस्तान का एक मुसलमान ना उनके साथ लड़ने गया, ना मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया, बल्कि आपके जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा मत इंटरफेयर करिए, पाकिस्तान का मसला है। ये पास की बात बता रहा हूं, पूरे बिहार, यूपी में ऊपर नीचे किधर भी नाप लीजिए, नॉट अ सिंगल मुस्लिम, दे ऑल सपोर्टेड पाकिस्तान। इंडिया तो आया दिसंबर की 3 तारीख को बांग्लादेश के वॉर में, उससे पहले 10 महीने जो कत्लेआम में था, कौन गया? नंबर 2, आज बलूचिस्तान में जंग चल रही है आज़ादी की, कोई है हिंदुस्तान का मुसलमान जिसने कहा हो कि हम इनके साथ हैं? लेकिन हर कोई इसके साथ है, फ़लस्तीन। तो जो लोग विशाखापट्टनम के अंदर CPM की कॉन्फ्रेंस में भी मुसलमान कम्युनिस्ट भी फ़लस्तीनी करते हैं, उनके मुंह से बलूचिस्तान क्यों नहीं निकलता? ये सोचिए आप। सेक्युलर लिबरल होना कुछ नहीं है, झूठ बोलना इनका किरदार बन गया। मैंने सुना है कि आप भी उस वक्त मुक्ति वाहिनी में थे। हाँ, आई वाज द मुक्ति वाहिनी, जेल भी काटी है। हमने पूरा उधार दिया है सर, अब वापस लेने आए हिंदुस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी। सर अमिताभ हीरावत, आप किधर बैठे हैं? सर आप क्वेश्चन अपना खुद ही पूछेंगे, माइक्रोफोन उनके पास ले जाएं प्लीज़। सर उनको क्वेश्चन पूछने दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं। राइट, यस जी, अमिताभ हीरावत जी। जी Dr. Frawley, during his discourse, had raised a very pertinent point regarding the overreach of the judiciary. Dr. Frawley, during his discourse, had raised a very pertinent point regarding the overreach of the judiciary. Today, judiciary. Today we are looking at a scenario where it seems that judiciary would become the most powerful organ of the state, overriding the executive and the legislature. We would like to know the views of the panel regarding this. See, I am very clear. Judiciary is an unelected body. It is arrogating to itself powers which are not its powers. And that has to be resisted by the political leadership, because good or bad, at least there is some accountability of the political leadership. आपको एक पॉलिटिकल लीडर या आपको एक पॉलिटिकल पार्टी या एक सरकार पसंद नहीं आती तो आप 5 साल के बाद उनका अकाउंटेबिलिटी कर देते हैं, उनके खिलाफ वोट करते हैं, उनको दूसरों वालों को ले आते हैं। जजेस के साथ क्या करेंगे? In the last 70 years, I think there is only one judge who has been impeached. Only one? No, resigned, yes. एक हुआ है शायद। हाँ? एक आधे पे फैसला करिए। So precisely my point. अगर एक भी नहीं हुआ तो क्या अकाउंटेबिलिटी है जुडिशरी की? और जिस तरीके के आजकल वाद विवाद चल रहा है कि हम 5 लोग डिसाइड करेंगे कि अगला कौन चेयरमैन बनेगा, फिर वो बन जाएगा चेयरमैन, फिर वही 5 लोग डिसाइड करेंगे अगला कौन। अपने ही भांजे भतीजे बच्चे जुडिशरी में लेके आते जा रहे हैं, अपने ही जो फेवरेट्स हैं वकील उनको जुडिशरी में लेके आते जा रहे हैं। क्या उनको जब सरकार उनके खिलाफ एक करती है कि भाई हमारे को ऑब्जेक्शंस हैं इनके बारे में, तो वो बोलते हैं कि नहीं आपके ऑब्जेक्शंस वैलिड नहीं है? हाउ इज दैट पॉसिबल?
What is the accountability of the judiciary? How can you be a self-perpetuating mafia? ये तो वही हो गया ना कि हम ही डिसाइड करेंगे क्या होगा. So I think it is important. और जो बिल लेके आई थी सरकार, जिसमें एक बैलेंस था कि हाँ जजेस की भी राय ली जाएगी, जुडिशियल फ्रेटर्निटी की राय ली जाएगी, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो सरकार करेगी. आई थिंक दैट वाज द राइट वे टू गो अबाउट इट. और जुडिशरी ने अपने ऊपर जो पावर्स ली हुई हैं वो उनकी पावर्स हैं नहीं, ना कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी पावर्स हैं, ना लीगली उनकी पावर्स हैं. ये दे हैव एरोगेटेड टू देम पावर्स व्हिच आर नॉट देयर्स. One point. Okay, sorry, go ahead. Yeah. Also in India, the judiciary is basically appointing itself rather than being checked by an outside body. In the United States, for example, the Supreme Court justice has to be, the president is the one who suggests the name, but they then have to be approved by Congress before they can take power. In India, they're perpetuating themselves. So there should also be a change in how they're appointed and the process so that it doesn't become just one fraternity continuing itself. And then once you have that monopoly over power, then of course you want to expand the range of what you can do. See, there are two different questions here. One is how the judiciary is appointed, and number two, what is the role of the judiciary? The judges in any democracy are separate from the executive, and if their decisions, if their ruling on a certain law is declared unconstitutional, the executive then has to go back to Parliament to create a law that overrides that decision. But as long as there is a constitution and as long as there is a judiciary in any parliamentary democracy, the judiciary has the last authority to interpret a law and make decisions based on the law. At many times, the laws are created based on the decisions of the judiciary, and many of the decisions of the judiciary are taken back to about 500 years of judicial common law in civil code, and as far as Canada is concerned, even the French system. The trick is that the judges cannot appoint fellow judges. That is where the contradiction is. That is where the law should be brought in, that that's not your baby. That's the role of the executive or the parliament or the Congress to do. And if you do that, you correct the problem that you see as in the decisions that are being made. Okay, यहाँ एक माइक्रोफोन ये मेरे सामने बैठे हैं 3 नंबर रो में, उनके पास इनको दीजिए, पहले से मेरे ख्याल से इन्होंने हट जाएगा. This is Ajay Goel. I am from Jaipur. My question with Mr. David. You ask about, tell about academia biased by the left. What do you suggest? How to move to the, say the not biased by the left? Because we see last year in the JNU, what's happened? They are both totally biased by the left. So what we are doing for the same? What are your opinion about the same? The left domination of the academia. Well, the left domination of the academia in India is so complete, they don't let people of different persuasions come in to certain departments and certain schools. Now, I'm not certain how that needs to be dealt with. There are issues of funding, there are issues of accountability, and there are issues of legal cases that can be brought in. But there are certain things that need to be considered. The students should come in for education. If they stay in the university year after year for political agitation, that should also be considered and maybe some action taken against them. The problem is coming also from the professors, and it's very interesting that many of these professors that are from the left who are criticizing the governments are actually living off the governments and having a fairly good wage in attacking the government, both in India and also in Europe and United States and other countries. So I'm not certain exactly how to tackle it, but there needs to be an addressing of this nexus of how the
academicians get their jobs, what they teach, and what their departments are, and creating departments that are more accurately representing what is going on in the country. And this is happening mainly in the humanities department. You'll see that the students in science, medicine, and other departments don't breed these more, you might say, almost even anti-national, at least very critical sentiments. So there needs to be an examination of that. But I think this is something that TOEFL is going to be able to give us a lot of clarity on. Maybe. Sir. Let's get to the audiences. Can we get a microphone here Sir, in the it's third here. row? In the third row, I have the please. mic, sir. बहुत देर से खड़े हैं, पीछे आपके हैं, उनको दीजिए प्लीज. Sir, I have the mic. थैंक यू सर. मेरा सुशांत सर से सवाल है सीपीईसी को लेकर कि सीपीईसी को लेकर अब हमने पहले अपोज किया इंडिया ने बिकॉज वो पीओके से निकला बिना हमारी परमिशन के, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जब ये डेवलप होगा, ईरान ने अपना इंटरेस्ट शो किया है और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि सीनेटर्स ये सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली सीपीईसी को चाइना हिंदुस्तान के साथ बिजनेस रिलेशन में यूज़ कर सकता है. तो इंडियन कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ चेंजेस होने का मतलब आपको क्या अंदाज़ा है इसमें? ये सवाल. नहीं, अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हैं, चाइना क्या कर सकता है? पाकिस्तान सीनेटर्स ने भी सवाल उठाया है कि चाइना सीपीसी का यूज़ इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन में यूज़ कर सकता है बिजनेस रिलेशंस में. ईरान ने पहले अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है, अब इंडिया के साथ उनको नहीं, देखिए ईरान ने जो इंटरेस्ट शो किया है वो इंटरेस्ट सारे शो कर रहे हैं. सीपीईसी में जाएगा क्या? व्हाट इज सीपीईसी? आई हैवंट अंडरस्टूड. एक सड़क है, उस सड़क से क्या फर्क पड़ेगा? उसमें कितना माल जाएगा? व्हाट इज द गोइंग टू बी द थ्रूपुट ऑफ दैट रोड? व्हाट इज, हाउ इज इट गोइंग टू चेंज द स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ दिस एंटायर प्लेस? So I have my skepticism about CPEC. I am not entirely convinced कि वो जो उसको गेम चेंजर और डेस्टिनी चेंजर और फेट चेंजर, देखिए हमारे यहाँ पर ये पंजाब में ख़ास तौर पर और पाकिस्तान में एक्चुअली एक हाइपरबोली क्रिएट करने की बड़ी एक टेंडेंसी है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. तो वो ठीक है कि अगर किसी भी देश के अंदर 40, 45, 50 बिलियन डॉलर का निवेश होगा और वो निवेश एक शॉट में नहीं हो रहा, वो निवेश ओवर 30 इयर्स होगा, तो अगर 30 साल के ऊपर आप 40-45 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे तो लगभग कितना 1.5, 2, 3 बिलियन डॉलर साल का है. अगर 3 बिलियन डॉलर से पाकिस्तान की डेस्टिनी बदल गई होती तो जो पिछले 15 साल में उन्होंने अपना मलियामेट किया है, जब अमेरिका की तरफ से तो मुफ्तिया पैसा जा रहा था ना इनके पास, तो उन्होंने कौन सा अपने आप को स्वर्ग बना लिया किसी तरीके का. तो चीन के पैसे से भी कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. एक सड़क ज़रूर बनेगी, लेकिन उस सड़क की क्या यूटिलिटी होगी और कितनी यूटिलिटी होगी, मेरे ख्याल इसमें बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं. वहाँ पर अभी भी, जैसे मैं कल भी कह रहा था, कोई रेलवे लाइन का प्रपोजल नहीं है. अभी एक है ऑन द ड्राइंग बोर्ड, लेकिन अगर वो रेलवे लाइन आएगी तो वो भी 20, 25, 30 साल के बाद आएगी, 25 साल के बाद. और पाइपलाइन का भी प्रपोजल नहीं है. लेकिन अगर वो बन भी जाती है तो जो वहाँ का टेरेन है, जो वहाँ की टोपोग्राफी है, 15, 16, 17 हज़ार फीट पे अगर आप एक रेलगाड़ी लेकर जा रहे हैं तो उसकी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, आप वहाँ पर कितना माल उसमें लेके जा सकते हैं. तो मुझे तो उसकी कोई इकोनॉमिक रैशनल नज़र नहीं आ रही. हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ तक ईरान का मामला है, वो उसके साथ लिंकअप की बात थोड़ी बहुत वो इसलिए भी कर रहे हैं, कुछ तो लफाजी है, लेकिन जो एक्चुअल में अगर वो लिंकअप भी करते हैं सीपिक के साथ, तो उसमें ये है कि भाई उनकी जो गैस ईरान के पास है उसका वो सौदा कर सकते हैं. कुछ उनका अगर सामान उन्होंने भेजना है अप कंट्री एंड इनटू चाइना, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन ईरान कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है या कोई बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा है. एक बयान आया है और वो भी पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा वो बयान आया है कि ईरान के सदर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में मिलते हैं और वहाँ पर ईरानी सदर ये कहते हैं कि भाई हम इसमें इंटरेस्टेड हैं. ये पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है, लेकिन ईरान ने एक्चुअली वहाँ पर क्या किया है अभी तक कुछ भी नहीं किया. मेरा सवाल एक सेकंड, लेट मी क्लैरिफाई दिस, 1 सेकंड प्लीज. ये सीपेक समझ जाएं, दिस इज इसेंशली टू इरेडिकेट द बलोच पॉपुलेशन फ्रॉम बलूचिस्तान एंड एस्टैब्लिश अ पंजाबी सेटलर स्टेट ओवर देयर. आप लोग आसान चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने में बहुत माहिर हैं हिंदुस्तानी.
एक आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द इशू एट स्टेक. देयर इज अ पोर्ट एट द माउथ ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो आपको दिया किसी ने, आपने रिफ्यूज किया, तोहफे में मिल रहा था, आपने कहा नहीं, गंदे लोग रहते हैं वहाँ काले रंग के. तो इट इज़ अ ब्लैक सिटी. यहाँ से पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अफ्रीकन ट्रेड सेंटर था ग्वादर. दैट इज a Chinese naval port. The road is only there to make sure that the established communities and cities are cut off permanently, क्योंकि 50 miles on both sides of the highway there will be no population. तो इसको कमर्शियल इशू इंडिया ऑब्सेस होके रह जाएगा, कितने मिले, किसको फायदा हुआ. दिस इज अ जियो political issue. It has got absolutely nothing to do with money making. जो पैसा है, that will go into the pockets of the Pakistani generals, because as Sanjay was pointing out, ये तो बिजली भी चीनी बेचेंगे इनको at about 3 times the cost to the market price. That's not the issue. This is where India has to come in and make sure that Balochistan breaks apart from Pakistan, ताकि ये सिलसिला permanently खत्म हो, धंधे से हट के सियासत और जंग पे आए, एंड बिल्कुल अग्रेसिव तरीके से. सर फ्रंट रो में सर आप. मेरा क्वेश्चन तारक फतेह साहब से है. मैं प्रकाश टेकवानी. हमारे पेरेंट्स 1948 में सिंध से यहाँ आए थे. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो पंजाबियों को तो पंजाब मिल गया, लेकिन जो सिंध प्रांत था वो सारा पाकिस्तान में रह गया. उससे वहाँ रहने वाले जो हिंदू सिंधी थे. सॉरी मैं समझा नहीं कि पंजाब सर पंजाबियों को तो पंजाब मिल गया ना, अमृतसर जैसे अपने इंडिया में है तो पंजाब उनको मिल गया. जी. लेकिन जो सिंधी लोग हैं जो सिंध में रहते थे, हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं जी, उनको कुछ नहीं मिला, और वो उनको अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी, और वो अपने देश में ही शरणार्थी बन के रह गए, और इंडिया के हर कोने में वो बिखर गए. जिससे क्या हुआ, उनकी जो भाषा और संस्कृति है वो समाप्त होने के कगार पे है. तो सिंधियों के ऊपर जो अन्याय हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या आप भारत सरकार को रिकमेंड करेंगे कि सिंधियों के लिए भारत में एक अलग प्रदेश होना चाहिए? ये तो आप क्या मैं समझ, व्हाट आर दे सेइंग, क्या कह रहे हैं भाई? मुझे आपका शोर समझ में नहीं आ रहा है. मैं इनका जवाब दे सकता हूं तो आप सुन तो ले. ये मसला आपको लेके जाना चाहिए अपने बच्चों के पास, जो आज तक ये नहीं कह सकते कि कराची में सिंधी नहीं बोली जाती. आपने सिंधियों को एक प्रॉस्परस कम्युनिटी बॉम्बे और दिल्ली में बना के रख दिया है, एज इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ एनीवन. एंड ब्राह्मण कुमारी जो हैं ब्राह्मण जो हाँ कराची से 52 में निकाले गए जहाज़ों में, जो राजस्थान में माउंट अल्टो पे बैठे हुए, किसी को कुछ नहीं पता. ना आपने कभी डिमांड किया कि सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए, कभी किसी सिंधी ऑर्गेनाइजेशन ने किया? नो. आप लोग इतना खुश हैं कि आप लोग प्रॉस्परस हैं कि हर सिंधी जिससे मैं मिला हूँ उसने वो इसमें खुश है कि देखा हम तो बहुत प्रॉस्परस है. सारा एंड में एंड आता है कि पैसे का धंधा क्या है. आपका सिंध चला गया और आप बैठे में बॉम्बे में और दिल्ली के नेबरहुड्स में कि साढ़े की फर्क पैदा. आपको कहना चाहिए कि ये सिंध कैसे गया, और उसके लिए आपको बीजेपी और कांग्रेस और सीपीएम और सबको कहना चाहिए. आपने जीएम सैयद को छोड़ा. और मैं आपको एक और बात बताऊं, सिंध में हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए, एक राइट नहीं हुआ. लड़काना में, मीरपुर खास में, कहीं पे भी नहीं. लेकिन when you saw the good financial possibilities of Bombay, the entire merchant class of Hindu Sindhis left. Karachi was a Hindu majority city. क्यों गए? कराची में कुछ सुना आपने दंगा communal? No, the Hindus were the majority. The next population were Baloch, Sindhis, काठियावाड़ी, गुजराती, मेमनी, कच्ची. आप अपने दादा से पूछें क्यों गए वो वहां से. आपको किसी ने नहीं कहा सिंध में कि निकलो. There has never been expulsion from Sindh. जीएम सैयद जो जीए सिंध मूवमेंट के लीडर थे,
उनके एक वोट से पाकिस्तान बना, और अल्लाह बख्श सुमरो को पॉइजन किया गया जो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे सिंध के। आपने आज तक अपने बच्चों को सिंध की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई। मैंने जिससे सैमसंग लिया दिल्ली में, उसने कहा हमारे नाना जो है ना वो सिंधी हैं, वो उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं। मैंने कहा लानत है उन पे यार, वो लोग जो आके तुम्हारी जबान तबाह करके बोलते वहां क्या होता है फिर। मैंने कहा वहां सिंधी होती है। अच्छा सिंध में सिंधी होती है? मैंने नहीं, चीनी चलती है वहां। आई एम पॉइंटिंग एट यू सर, योर चिल्ड्रन डोंट नो अबाउट सिंध, your brothers sisters don't know about sin. All you know is कि in the fight to be victims you are somewhere up that ladder. नीचे से दलित इधर उधर करते हुए 2-4 हिंदू पंजाबी मिल जाते हैं आपको, आर्य समाज के इधर उधर, ये छोड़िए और इंडिया पे गए कि बगैर सिंध के हिंद हो ही नहीं सकता, तब मैं आपके साथ हूँगा। सर मैं थोड़ा सा इसमें एक ऐड कर दूं। मुझे ये हैरत होती है कि जिस प्रिंसिपल पर पाकिस्तान आज जम्मू कश्मीर को एज मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट मांगता है, अमरकोट के राजा ने 80% हिंदू मेजॉरिटी होते हुए और वो पाकिस्तान में शामिल हो गया, आज तक किसी ने प्रोटेस्ट किया? जहाँ सिर्फ ये अमरकोट को उमरकोट कर दिया। सर मेरा सवाल यहाँ कोई सवाल कर रहे थे सर, मेरा सवाल तारिक फतेह साहब से है सर, प्लीज़ लेट मी स्पीक। आप सब लोग कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं वहीं से हूँ, कश्मीरी पंडित, और 26 साल पहले हम सबको निकलना पड़ा वहाँ से, और आज तक इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं रिफ्यूजी हूँ, मैं माइग्रेंट हूँ, मैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन हूँ, मैं ये क्या हूँ भी या नहीं हूँ। ये तो एक पहलू है सर इसका। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंदरबाट में ये सब हो रहा है, जो अभी चल रही है, आने वाले समय में भी चलेगी। मुझे मेरा सलाह इसलिए मिला क्योंकि इंडियन पासपोर्ट में सीने से लगा के बैठा हूँ। आप इंडियन पासपोर्ट की तलाश में हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? आप सिटीजनशिप इंडियन की चाहती है आपने? देखिए, अगर मैं इंडियन होके सब कुछ खो बैठा हूँ तो आप क्या पाना चाहते हैं? मैं एक आपकी बात करूँ, पहले तो मैं पंडितों की बात करूँ। आपने लास्ट ईयर किया था दिल्ली चलो मूवमेंट, थी ना, दिल्ली में इवेंट था दिल्ली चलो, 5000 लोग आए थे 30 लाख के शहर में, जहाँ 80% हिंदू पॉपुलेशन है। आप नॉन कश्मीरी पंडित थे ही नहीं वहाँ पे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सियासी मूवमेंट्स के अंदर विक्टिमहुड को मत पकड़िए। 2-4 आप भी बम मारें जाके पाकिस्तान में। सर ये बातें कहने में अच्छी लगती है, ये कहने में अच्छी लगती है सर। मैं नहीं, ये कहने में अच्छी लगती है। ये माइक्रोफोन प्लीज पीछे जरा ले जाएं, वो पीछे खड़े हैं। हाँ यस, आप खड़े हो जाएं। जी जी, आप देखिए, पूछिए अपना सवाल, पूछिए अपना सवाल। आपको कश्मीर की बात करनी है तो ये मत कहें अमेरिका में कि वी आर द मोस्ट प्रॉस्परस इंडियन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहते हैं ना, हेलो, कहते हैं ना सारे कश्मीरी कि हम पंडित बहुत ऊंची पार्टी हैं। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कम करके दिखाओ ना। 2-3 आप भी तो बॉर्डर पास करें, जाए ना मुजफ्फराबाद में। ये उन्होंने ठेका लिया हुआ कि वहां से लोग मरने यहाँ आते हैं, आप भी तो जाएं वहां। मैं चलता हूं आपके साथ। अच्छा सर प्लीज, मैं कह सकता हूं, कह रहा हूं आपसे मैं। पीछे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पीछे जो खड़े हैं आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं अविनाश, अभी 3 महीने पहले जयपुर आया हूँ। अब मैं कोलकाता से ट्रांसफ़र होके आया हूँ। ठीक है, तारिक साहब ने एक बात कही थी, लेफ्ट लिबरल्स। अभी एक सिंधी अंकल ये कह रहे थे कि इनके लिए एक अलग प्रांत होना चाहिए, इनके अलग प्रदेश होना चाहिए। तो यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं, इन्होंने सबने इस चीज़ का विरोध किया था अभी। तो मैं मानता हूँ कि यह हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है। सर सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि हम जो लेफ्टिस्ट थॉट्स हैं उसका कैसे मुकाबला करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया के कल्चर को सबसे थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, लेट हिम आंसर। ओके, देखिए, लेफ्ट इज पार्ट ऑफ इंडिया। अगर भगत सिंह नहीं होते
तो ये जो राइट ने भगत सिंह पे कब्जा किया है, ही वॉज पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, और उसका जो लास्ट राइटिंग थी वाई एम एन एथियस्ट। सीपीआई का हिस्टोरिकली रोल रहा है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, डोंट बिकम लाइक द लेफ्ट एंड से कि लेफ्ट का रोल नहीं है। लेफ्ट नहीं होता तो 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, 25 घंटे की ड्यूटी होती। लेफ्ट नहीं होता तो औरतों को वोट नहीं मिलता हिस्सा, लेफ्ट नहीं होता तो सब्सिडी नहीं मिलती, लेफ्ट नहीं होता तो गवर्नमेंट बजट्स में नहीं करती। जो राइट विंग की गवर्नमेंट्स हैं 20th सेंचुरी के फॉलो में, उसके अंदर कोल माइन में जब कोल माइन वर्कर जाता था तो मर के ही निकलता था। ट्रेड यूनियन इज द सेविंग ग्रेस ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास। आप मत करिए। इस वक्त जो लोग लेफ्ट हैं, ये जो हर मार्क्सिस्ट आजकल मिलीनियर है, ये ना लेफ्ट है ना राइट है, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपके बताइए, मैं आपसे बात करता हूं डांगे की या नमूद्रीपद की या कैफी आजमी की या रॉय जो एमएन रॉय थे या पीसी जोशी की, इन लोगों ने एक पाई नहीं कमाई। सारी जिंदगी ये जो पार्टीशन हुआ उसके अंदर डेड बॉडीज को क्लियर करने के लिए सिर्फ सीपीआई के लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि इनको पता, लोगों को पता था कि इनका धर्म ही कोई नहीं है, ये सब एथियस्ट हैं। तो ना इनको मुसलमान मानते थे, ना हिंदू, ना सिख। और डेड बॉडीज का काम या तो एंग्लो इंडियन रेलवे वर्कर या सीपीआई का वॉलंटियर करता था। तो उनको आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये आप कह ही नहीं सकते कि हिंदुस्तान से लेफ्ट को कैसे हटाया जाए। बात वही प्रोफेसर की हो रही थी। अरे राइट विंग का आदमी तो प्रोफेसर बनना ही नहीं चाहता। राइट विंग का आदमी कहता प्रॉफिट कहां है। मैं सीधे बता रहा हूं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्यों लेफ्ट के हाथ में? ये जो है बगैर नफे के काम करने का, ये तो मैं खुद लेफ्ट से हूं, ये तो हमारे दिल में कि हम पैसे नहीं लेते। ये जो चोर हैं ये लेफ्ट के हैं ही नहीं, ये तो फ्रेंचाइज जैसे मैकडॉनल्ड की चोरी करके अपने सैंडविच गलत बेच रहे हैं। ये आप सीमा मुस्तफा को लेफ्ट समझेंगे? आप ये सीताराम को लेफ्ट कहेंगे कि वो जाके मिल रहा है जिलानी से? जिलानी जो कम्युनिस्टों को हैंग करने के लिए तैयार है, सीताराम येचुरी उसके दरवाजे पे, अरे साहब महामारी सुन लीजिए, हम बंगाल से आए हैं, बड़े कम्युनिस्ट हैं। द मैन हु मर्डर्ड कम्युनिस्ट, द कम्युनिस्ट वेंट टू बेग टू हिम। तो ये लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट का काम है मजदूर के राइट्स के लिए लड़े, और वो हमेशा लड़ेगा। राइट नहीं आएगा, राइट होगा अंबानी साहब के साथ, ये मैं बता रहा हूं आपको। कुछ क्वेश्चन इस साइड से प्लीज, इधर माइक्रोफोन जरा दीजिए इनको, इधर से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आने दीजिए। Hello. I just actually wanted to add the same thing, and I wanted to ask Dr. Frawley. He had said that left in the, he almost ridiculed left. Left is a political ideology, and you cannot snub any ideology, a political ideology in a free country. And now, just now, we have heard so much good about left. Sir, question. Yeah. Sir, question पूछिए, question. Please ask your question. No, I just wanted to ask that what is wrong in universities that is talking, if you want to curb a political ideology from growing, from developing, why we want to curb it in the universities when you are very so particular about Jawaharlal Nehru University? No, Sir, I don't want to get involved. No, I don't want to cross get talks. involved in a discussion. See, There is a please. Okay, thank you. Thank you. It's a political ideology. I am not a leftist, by the way. बैठ जाइए, बैठ जाइए। I am not a leftist, by the way. अरे, I please just sit down, please sit down. They are answering your question. Please sit down. ये गलत बात है। This is not right. Just one quick point. One of the problems is these Western political terms like left and right don't really apply to India. Not, to some degree, but not to the same degree. Sir, I've been to jail twice as a leftist. You can't tell me I was doing for nothing. Well, let me finish. Okay. For example, Modi's economic policies are would be considered to be to the left of what Obama is doing in America today. And also in India, in America, you have the left, the more liberal left, and then you have the radical left or the communist. There are no communist student unions in America. Well, that's the whole point. You see, left is a term coming from the West, and left had two terms, and left was considered to be the parties that were involved with giving social welfare programs,
internationalism, workers' rights, but they extended then also to the communist or the radical left, which was state socialism. Now, in India, in JNU, these are people from the radical left. They are self-proclaimed Marxists, whether they're Irfan Habib or Romila Thapar or Arundhati Roy. So they can be called leftist in a certain sense, okay? But we have to understand their ideology and what they are doing. It's not a question of just getting caught in left-right dichotomies of thought. In India, you didn't have a left-right tradition. You had the idea of Dharma, you had the idea of all these things. And then in modern times, you imported a lot of these ideologies from the West, including the communist ideology. Communism caused a cultural revolution in China, but it also caused a kind of cultural revolution in India, which include denying its traditional systems, and also aligning itself with certain internationalist groups, Soviet Union, Communist China, and creating a left in India that often had more sympathy towards the leftist groups outside of India than developing a national unitary narrative. And then we had this phenomenon where Hindu groups are simply called fascist on principle, even though they are not following any principles or ideals of fascism, or even were ever connected to any of the fascist groups in the West. Even Modi is being called a fascist by certain of these groups. So this discourse, this kind of poisoned discourse of the old left is still being used in the media in India today. And the failed socialist policies that failed everywhere in the world, we still have parties in India, even now Congress and some of these other parties in the north, who are want to reinstate the old failed socialist populism and more leftist views that were given up. In JNU, the new icon is Che Guevara, who was a fighter in in South America, involved in the Cuban Revolution. They're having the generation look at the failed revolutions of the past rather than developing knowledge and developmental models for the future. Let me clarify a few things. It is not India that produced the Industrial Revolution. We are stuck in the bullock cart. We didn't produce anything like the steam engine. It is the factories that produced workers, which produced the trade unions. It is not the idea, being anti-West. Then if you want us to reject the models that came from Europe, we should first be rejecting the American right that supported slavery, that supported 12-hour workdays, that destroyed the backbone. And the left came from Chicago. May Day is not celebrated because it came from Moscow. It came from the United States of America. There is a rich history. And to suggest to people that the people who fought Che Guevara is equivalent to Bhagat Singh. If you denounce Che Guevara, you're also denouncing Bhagat Singh. Everyone, you think Netaji was creating the Indian National Army because of some inspiration he drew from the Vedas? No. He went, even with all his faults, went first to Germany. Then he went to the Japanese army. He fought on the Eastern Front. The point is, if we are going to demonize anyone, whether it is the Hindu right wing or whether it is the secular left wing, we do not handle political discourse honestly. All the things that we have in India going for it today came around in the 50s in the public sector investment in IITs, in public railways, in the owning of coal mines, in the taxation system. Otherwise, India would have been worse off today than it was, because our natural resources that came to India were cut off by creating Pakistan. The rivers were cut off. Everything was destroyed, and it had to be managed. We can find out the flaws in Nehru and Shastri and everyone, but we cannot demonize them as the enemies of India, as what some in the right wing are doing today. We are not doing a great service to this country because of attacking simply based on sloganeering. If we descend to that level, you are no better off than Pakistan, because some of the reaction that I hear is exactly what the Islamists do.
that we are pavitra, we are pure, everything else is nonsense. We cannot be anti-West because it is the West that created these eyeglasses that he and I wear today and see each other, or the insulin that I have to take for diabetes. We would have been dead at the age of 55 if we had not brought in the great medical advances from Greek times to European times. And these women would not be sitting in the front row next to men if it had not been for the suffragette movement and the feminist movement of Europe and America today. We have a great thanks to give, and imagine, we have nothing to get from China or Japan. Why? Because China and Japan too are adopting the same industrial systems, the same working systems that European civilization has produced. We cannot dump European civilizations and their contribution to human history simply by diving into saying we are 5,000 years old. Yes, but in Mohenjo-daro we are still driving bullock carts. And a British minister thought that it was an exhibition of 5,000-year-old civilization, till she was told, no, this is a regular bullock cart. We are stuck there. We need to get out. And we need to adopt scientific research that does not come out of mythology, that comes out of science, questioning, question. What was the Indian philosopher who said, question everything? Yeah. He said, question everything. And today we are sitting down saying, we can't question our past. Of course we have to question our past. What sort of people lived as slaves? How did the damn Arabs conquer us? I need to know that answer. And I did not find that in the 5,000-year-old civilization that allowed 1,000 years of barbarism to destroy my India. These Uzbeks destroyed us. These Afghans came and destroyed us. And till today, you name your cities, Aurangabad and Sikandrabad and Lodi. This is what you have to challenge. And you'll only do it if you open your mind and don't suspect to say, what is good 5,000-year-old? No, there were no railways there. There was not even a bicycle there. There was not even a slingshot. Raja Daher died because we were stuck in the past. And the Arabs were picking up from the Greeks and using that technology to attack India. Thank you. Okay, can I intervene here and wait. Can I request next 2-3 questions to come from women? There are many women on this side, please. Can you take the mic to here on this side? Sir, please. मेरा प्रश्न और एक ऑब्जर्वेशन भी है. मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूर्व में जब सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद के बीच जो मतभेद हुआ, वह मतभेद इस बात पे था. आपका क्वेश्चन किससे है? क्वेश्चन तारिक फतेह साहब से. वो मतभेद इस संदर्भ में था कि मौलाना आज़ाद साहब कहीं एक इल्यूजन नर्चर कर रहे थे कि मुस्लिम लीग को अगर हम अपीज करके रखेंगे तो हम कभी पार्टीशन के पश्चात एक लूज कॉन्फेडरेशन बना पाएंगे. एंड सरदार पटेल वॉज वेरी कन्विंस्ड कि ये जो मुस्लिम लीग है और फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड है, इट शुड बी एक्सपोज टू द इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट मुस्लिम्स. Somewhere that did not work. Sardar Patel was, categorized as a fundamentalist. आज उसी का रेजोनेंस हम देख रहे हैं जो आज हो रहा है. लेकिन क्या कितने ऐसे मुस्लिम्स हैं जो आकर हार्डकोर फंडामेंटलिज्म को सरदार पटेल के तरह एक्सपोज करना चाहेंगे? और आज भी वो फॉल्ट लाइन अभी भी विद्यमान है कि हम अभी भी उस अपीजमेंट पॉलिसी से ऊपर निकल ही नहीं पाए हैं, बाहर आ ही नहीं पाए. देखें, आपको पता होगा सबको कि जो प्लान था 46 के अंदर कि इंडिया विल हैव 3 डिफरेंट जोन्स, ए, बी एंड सी जोन, जो एक सिंगल डोमिनियन में होंगे और 10 साल के बाद तय होगा कि इन 3 जोन्स का क्या. इस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस अग्रीड एंड देन द मुस्लिम लीग अग्रीड. इफ़ यू रिकॉल, इफ़ द सम हिस्टोरियन हु कैन करेक्ट मी, प्लीज़ बताइएगा. It is then when Jawaharlal Nehru rejected it that the Muslim League and Jinnah called for the Direct Action Day in Calcutta that sealed India's unity forever. आपका सवाल था कितने मुसलमान ऐसे हैं? मेरा जवाब है बहुत कम. उसी रो में पीछे वो मैम आप क्वेश्चन पूछना चाहते थे, उनको दीजिए पहले प्लीज माइक्रोफोन. ये
My question is to Sushant Sareen ji. Sushant ji, every nuclear state is responsible except Pakistan. So does US has any control on Pakistan about it? Can you repeat your question? Repeat. हर न्यूक्लियर स्टेट का जो एक रिस्पॉन्सिबल होती है पाकिस्तान को छोड़ के वो कुछ भी बयान कर देते हैं अपने न्यूक्लियर के लिए, तो क्या यूएस का या किसी और कंट्री का कंट्रोल है पाकिस्तान पे, या फिर जो उनको लगता है वो बोल देते हैं? आई हैव डाउट्स कि अगर यूएस का कोई कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से बात हो रही है, मेरे ख्याल पाकिस्तान ने जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का वो दर्शाते हैं अपने न्यूक्लियर पोस्चरिंग में, वो एक कैलकुलेटेड इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोई ये नहीं है कि वो कुछ तो उनमें से जाहिल हैं तो वो उनको पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर बम होता क्या है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर, उनके बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, दे डोंट हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़, बट उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बम हम गिरा देंगे, दे डोंट नो व्हाट इट मीन्स। द प्रॉब्लम इज़ एज फार एज द एस्टेब्लिशमेंट इज़ कंसर्न, जिनको पता है वो इस चीज़ को नर्चर करते हैं, इनकरेज करते हैं कि बोलते रहिए आप, behave in an irresponsible manner, because this is what has convinced us कि अगर कल को कोई इस तरीके के जंग वाले हालात हुए तो पाकिस्तान इन न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेगा। ये हमने अपने अंदर ये धारणा बना ली है और यही वो पाकिस्तानी चाहते थे जो वो सक्सेसफुल हुए हैं। हमको वो जो उनका पाकिस्तान का भ्रम है हमारे बारे में, उसको तोड़ना होगा अगर हम उनका जो ब्लैकमेलिंग है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो हम अभी तक नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल उनकी तरफ से जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होता है वो एक कैलकुलेटेड तरीके से होता है, वो अपनी इरैशनैलिटी दुनिया भर को दिखाना चाहते हैं और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं, ऑल्दो उसके कुछ नुकसान भी हुए हैं उनको। इंटरनेशनल फोरम्स पे या जिस तरीके की सिविल न्यूक्लियर डील की भारत को जो मिला, या NSG में भारत की जो दावेदारी है कंपेयर टू पाकिस्तान की दावेदारी, उसमें बहुत अंतर है। और वो जो पाकिस्तान जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, जो वो मुजाहिरा करता है, उसका खामियाजा जो है वो इन चीज़ों में भर रहा है। लेकिन भारत के साथ जो उनकी इक्वेशन है उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारे को कन्विंस कर दिया कि हम तो पागल हैं, हम तो इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक वो हमारे को जो डायनामिक है उसको तोड़ने की ज़रूरत होगी। ये ब्लू शर्ट में ये पीछे हैं, थर्ड रो में, यस, ब्लू शर्ट में, यस। I have two questions, one to Sushant sir and one to Dr. David. So first, I can go with sir. It's a question related to the new Republican administration, which is just coming in, stepping in. And I'm Nishant Vyas. Actually, what is your take? Will the Obama's policy of withdrawing of all the troops from Afghanistan, will he stop that, and will he put more boots on ground? And what will be India's, how India's interest will be protected in that case? I don't think it's clear as to what exactly will happen. I think we are all waiting and watching के the new administration की policies क्या होंगी terrorism को लेकर के। कई जगहों पे तो उन्होंने एक बड़ी out of the box thinking का मुजाहिरा किया है कुछ इंटरव्यूज़ में, कि जैसे फॉर एग्जांपल जब ट्रम्प ये कहता है कि भाई हमको रूस के साथ एक लिहाज से सहयोग करना पड़ेगा ताकि हम इस्लामिक स्टेट को ख़त्म कर सकें और हम इकट्ठे मिल करके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो वो एक रियलिज़म का मुजाहिरा कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है रियली, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो अफ़गानिस्तान में कहीं एक लिहाज से पाकिस्तान की हिमायत ना करें। एक पॉसिबिलिटी है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सिंध, और ये जैसे हम लोग करते हैं कि हर जो पाकिस्तानी हुकूमत होती है उसके साथ हम सोचते हैं कि हम शायद कुछ पेशरफ्त कर पाएंगे, वही चीज़ अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ करता है। तो एक वो एलिमेंट ऑफ डाउट है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के ना करें,
लेकिन वो ये डिसाइड करें कि हम अपने ट्रूप्स को एंडलेसली अफगानिस्तान में नहीं रख सकते। एक पॉसिबिलिटी है, और उसका जो असर होगा वो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन ये मान लेना कि वो अफ़गानिस्तान से अगर फ़ौजें हटा लेते हैं तो वो भूल जाएंगे अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, मेरे ख्याल ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी भी हकीकत पसंद अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी कि अगर आप वेस्ट एशिया में इस्लामिक स्टेट को ख़त्म कर रहे हैं या उनको यू आर बॉम्बिंग देम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो वो जो लोग वहाँ से बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो अफ़गानिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, अगर वो उनको अफ़गानों ने नाको चने चबा दिए और उनको विड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया, तो फिर ये वापस तो नहीं जाएंगे अफ़गानिस्तान। तो वो उससे बड़ा सेफ हेवन दुनिया में कोई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल जो मैं कल भी अर्ज़ कर रहा था कि ये हमारी एक लिहाज से लड़ाई है जो अफ़गान लड़ रहे हैं, और उनका जितना हमको समर्थन हम कर सकें हमको करना चाहिए। अब अमरीकी नई नीति क्या होगी अभी कहना संभव है, शायद 1.5-2 महीने में कुछ पोजीशन क्लियर होगी। Sushant, question for you. Yesterday, Sanjay mentioned that this forum was possible because of the power of social media. And we have seen the power of social media in both positive and negative lights. The negative, I'll speak first, is the use of social media by radical Islamists to promote their hate, as well as radicalize and recruit. The British government or the British Army has a social media brigade which they are using it to scout, find out who are these people and take relevant action. Why is India doing something similar? Is our armed forces doing same? Secondly, and the positive side is, General Hasnain talked about perceptions. Social media can give that positive perception across the world because of its wide reach. The government can actually channelize this social media by employing or probably hiring in a very professional manner people who can project a very positive image of India across the world, which will be part of this whole soft part that we talk about across the world. Your views? See, on the misuse of social media, I think that point is very well taken. But, to my mind, Yusuf, the problem isn't social media. That's a tool. It's like saying that because somebody chops somebody's neck off with a kitchen knife is the problem. The kitchen knife is not the problem. The problem is the guy who's chopping somebody's neck off. So I think that is one factor we need to take into account. But the point which you make, I think, yes, the government has been looking at the kind of propaganda and the kind of incitement which is happening through social media. I think there are departments, or there are what is the correct words? Maybe a wing of the intelligence agencies and all which are looking at it. That is a no-brainer, of course. But, and which is one of the reasons why some of the arrests which have been done over the last few years have been busted basically on the basis of social media, what postings people were making. They entered into the watch list, then they were monitored, and then, you got to fix what exactly these guys are up to. A lot of people probably vent their spleen on the social media. It's nothing serious, but it's, it's just a kind of a pressure cooker, safety valve. But yes, the government is monitoring it. Is it doing enough? I don't think so. I don't think anybody can do enough because, just the sheer magnitude of the problem is so big that I don't see how, how many, see, we keep talking about what the Americans are doing and what the Brits are doing and what everybody else is doing. But look at the kind of investments they have made. The Washington Post had a 7-part series a few years back on the kind of infrastructure which was built up to monitor what is happening on the internet almost 6 or 7 years back, right? There are something like 300,000, 400,000 people across scores of places spread all over the US who are doing this job. How many, how many people are there in the Intelligence Bureau Counterterrorism Department? I heard once it was less than 50.
So look, there are major investments you need to make in countering these threats. The bigger problem is, to my mind, that the governments are very slow to react. They are always playing catch up. The government should not be playing catch up. One of the reasons why the British were so successful when they were, expanding their empire was that they had the edge on technology, they had the edge on narratives and everything else. They were never playing catch up. Today, governments are playing catch up, and that is the biggest problem. So that needs to be countered. The second part of what you were asking is on, what is that? See, again, the use of social media, it's again a little tricky. What kind of a narrative should you create conditions that people themselves start espousing that narrative and that takes root? Or should you peddle a narrative on the basis of maybe 500, 1,000, 2,000 people whom you give a line that, this is the line which you need to start peddling? It's a tricky situation, how do you manage that? One example of that is that in the case of, let's take the 2014 election, right? The mainstream media was implacably opposed to Narendra Modi, right? They were not willing to countenance him, and the worst kind of language was used about him. But the pushback came, and it was not that the BJP was or somebody was prompting that pushback. Social media gave a voice to people, and people on their own volition started creating a new narrative. Nobody was instructing them to create that new narrative. It was the urgings of the people themselves which created that new narrative. And if in the case of Donald Trump and in the case of Mr. Modi, they have won their elections, I think social media has played a big role in both their victories. Because look at Trump, every newspaper in the US, except for maybe a few, was implacably opposed to him. So I don't know where you draw the balance between, having some kind of an institutional response mechanism versus creating conditions that people on their own, create a narrative which actually takes the day. So it's a tricky one. One last question from Mr. Prakash Bhandari. Yes. Pandit Vamdev Shastri Pranam. My question is to Pandit Vamdev Shastri Vedacharya. Sir, you have spoken about the role of media. I'm not talking the social media, you're talking with the mainstream media. You almost said that they are irresponsible. You almost said that they are not responsible, they are irresponsible. There's a distinction between the social media and the media, the mainstream media. Mainstream media is organized, social media is not. Social media is an unorganized sector, it's an individual voice. I want to ask from you, what kind of a media could be your ideal? What is your idea? Two, my second question is, that is one question I would like you to answer, and जना फतेह साहब भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुरीन साहब भी ज्वाइन कर सकते हैं, सरीन साहब भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये मीडिया, पंडित जी, I want to ask you one thing. The media as a whole, there are irresponsible media. There are stupid medias. But this media in this country is the backbone of democracy, that I can tell you. They are the backbone of democracy, and social media has come later. Even prior to the partition, it was the media who played a role, who created awareness, not only across the country. So they're dismissing it. I would say there could be a black sheep among the media, but don't brand media as irresponsible. My second question is, none of you have been able to give a solution to this country on Kashmir. Can you give a true liner on what is the solution to Kashmir? Solution to the? I'll give a one-liner, just erase the line of control.
Well, first of all, let's go back to the issue of the mainstream media. We're not saying that all media is bad, but media should provide the role of media, which is to report the news. In India, we see the media driving the news, sometimes inventing the news, and favoring certain stories over others that promote a certain narrative or perception entirely correct. So I would say the media in India has a certain political bias, which we can all see. And this is particularly true in the English language Delhi media. You can even see how they operate. I'm not going to mention by name, but we see interviews of people asking for their point of view. When someone gives a point of view different than what the moderator or the interviewer wants, they move the microphone so that person doesn't make a statement. So there is a bias in the media. That doesn't mean all media is bad. But again, media should be there to promote, to show what the news is, rather than to project a certain point of view and promote that. What was said about Modi, what was said about Trump is clear. Now, the social media gives a voice to those who may not have a voice in the mainstream media. Sometimes those are better voices, and even sometimes those could also be voices that may not be as good. But the point is, it offers another view for people, and it offers a democratization of the media. The media is generally following has certain financial, certain influences behind it that are not always democratic. But we should not portray the media overall as the enemy. It is how it is used. And that is why we must consider we always have to use the weapons of the age. If Indian armies were defeated in the Middle Ages because they were using out-of-date weapons or strategies and all of that. Once the Indians learned to use the same weapons, they could have the same parity in battle. We live in this era where there's a kind of information media war, where there are cultural wars, where there are different narratives going on. And so far, that narrative has been dominated by a certain group of people in India who do not represent the majority of people in India. And also, India has, what we're saying is that India doesn't need to go to the past, but there is a continuity of civilization that needs to be honored. There is a Bharatiya narrative, just as there's an American narrative that goes back to a certain point, or a British narrative that goes back to a certain point. There needs to be a creation of a national narrative that is actually reflecting the history and culture. And here again, India is a civilization in its own right. It's not simply a sidelight of Western civilization. Western civilization can certainly offer and has offered much of great value to India, but the Indic traditions, including up to the science of consciousness, also have their honoring. And as we move into the 21st century, where we emphasize knowledge-based systems, the knowledge-based systems and approach that have been going on in this country for many centuries will have greater value and relevance because they are looking at this deeper model of human consciousness. Your point on the media and on the freedom of media, and that the media is very important for democracy, I think it's a no-brainer. It's absolutely right. I don't see how anybody can question it. All that I'm saying is that because it's become so lopsided, and the only one problem I have is, I don't have a problem. See, India is a free country. Anybody is free to support whoever they want to support. How can anybody take issue with anybody else on that? But then at least be honest enough to declare where your loyalties lie, or what is the lie. You can't tell me that I'm completely objective and then take a line which shows that you're completely unobjective. I think that is the problem. And to be fair to what happens in the West, columnists, for example, and this is particularly with columnists openly declare their political affiliations or whom they are endorsing politically. They openly do it. Why should... भाई आप एक तरफ तो आपने चोगा पहना हुआ है कि हम तो जनाब बिल्कुल completely neutral, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल ही न्यूट्रल नहीं है. You are not taking a balanced view on anything. One side is only good, one side is only bad.
So either you have the balance, I don't have a problem, or you say that I am with BJP, I am with Congress, I am a communist, openly say it. This duplicity which has come into the Indian media, I think that is a bit of a problem to my mind. एक second, let me. Sir, the time is up, I think. Now, some people have to catch flights and go to Ruchi. Yes. Sir, I just want to add 1 second, please. It's very simplistic to use the word mainstream media. A newspaper is not a television station, and radio station is not anything to do with a TV station. All the newspapers in this country offer a large variety of opinions that are expressed clearly on the comments page. The standard of journalism in India is not to be worried about. The consumer has the choice of at least 5 or 6 dailies and numerous regional newspapers of various orders. The problem is television, where this occurs, where the hosts and the reporters have blended into one, where someone like Arnab Goswami has taken a role that simply, even though I've been a guest on his show, is by traditional journalism is not acceptable, because he's a moderator plus a protagonist. Now, if that is introduced and acceptable as the highest rated show in English TV, then the media is reflecting the way people think. The other thing I would suggest, it's the only profession in which everyone who is not practicing is an expert in. If I were saying this about medicine, people would throw me out. But I've put in about 45 years of my life as a reporter and now as a columnist. I still rate Indian newspaper, I discount the TV, I still rate the Indian newspaper industry as one of the few places where a variety of voices can be heard, can be written, that allow opinion pages for a very wide variety of folks. And there are newspapers right down from Kerala up to Kashmir that are. Sorry? I am not reported. They use their surrogates in India to report on me. A big thank you to the audience for great 3 sessions of the Jaipur Dialogues over 2 days. And a very, very big thank you to our speakers who have been extremely, brilliant discussions, very patient with questions, and giving everybody an opportunity to put their point of views across. Thank you very much. We'd also like to thank our industry partners, PhD Chambers, media partners, Swarajya, event partner, Akshat, and all others associated with making the Jaipur Dialogues maiden event a success. There are many people who are working behind the scenes, and we thank them all for their support and help. We now conclude the Jaipur Dialogues maiden event. See you all very soon with more events under the conclave of the Jaipur Dialogues. Namaste.